Afternoon, sir. Hello Good everyone. Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Can you see this board? Good Good afternoon. afternoon. Yes, afternoon, sir. Good afternoon everyone. So is this board visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Any doubt from last class? So Maxwell-Boltzmann's distribution claims that the numbers of particles in energy range E to E plus dE are given by this number, which is proportional to or which is equal to some constant and then this, okay, into dE also. So if he wants to know how many particles are there in the range E2, E1 to E2, when we integrate over it, E1 to E2. Or in simple words, in the similar manner, I can define that the numbers of particles having x component of velocity from bx to bx plus dbx, and let me write those numbers in short form as nbx dbx is equal to some constant times e to the minus 1 upon kt. And what is the corresponding energy? Let us say some particle is moving along x-axis with this velocity. Then energy in that particle is half m bx square, right? So 1 by kt m bx square on 2. Okay. Same thing applies to bicomponent of velocity. Some constant minus m by square upon 2 kt, and same thing apply to z component. What is this c? c को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Anyone? What is the condition to find this constant? All we know that this is the distribution, or in other words, what is the physical meaning of this sentence? Let us say this is a gas chamber. Okay, there are, let us say, some 1,000 particles in this chamber. We draw a scale here. This scale represents the x component of velocity. So center is 0. This may be 1, 2, 3, and so on. Same on this side, -1, -2, -3, -4, and so on. Okay. Let me make pins of size, let us say dbx is equal to 0.5. Sorry.
Okay. Now I take one particle from here. I check its velocity. Let us say this velocity is 1.7. Then where should I put this particle? So this velocity is in the range 1.5 to 2, right? So I put this particle in this range, 1.5 to 2, means this one here. Okay. I take another particle, let us say this. I check its x component of velocity. Let us say the x component of velocity is 2.3. So it is in the range 2 to 2.5. So I put this particle in this box. Okay. Let us see this. Let us say the velocity is 0.4. Where I put this particle? 0 to 0.5 in this box. Okay. Let us say this has velocity minus 2.1. So it is minus 2 to minus 2.5 here. That's how I see all these 100 particles and accordingly put them in their respective boxes. Right. Now let us count how many particles are there. Let us say we have only 2 particles here. Let us say the number of particles here is 3. Let us say number of particles here is, let us say 7, and so on. Okay. So we will get some number in each domain. What is the equation of this curve? यदि इन सभी को मिलाते जाएं, according to Maxwell-Boltzmann, the distribution should be like this. Why? This is numbers of particles in a range with respect to that velocity, and this formula is some constant times minus mdx square upon 2 kt. How will you find this constant? क्या आप constant पता कर सकते हैं कितना होगा? Let us say the total number of particles is given to you. Total number of particles are n naught. How will you find this constant? Sir, Vx is equal to 0. Sorry? We put Vx is equal to 0. Vx is equal to 0. Vx is equal to 0 means this n dx is equal to c. So for that we need to calculate how many particles are there from 0 to 0.5 or minus 0.5 to 0, right? Do we have any such information? क्या ऐसी कोई information हमारे पास पहले से है? All we know that these are the total number of particles. So let's इंटीग्रेट करके इक्वेट कर सकते हैं right. total number of particles. See, now we know the distribution. We can also calculate total number of particles from this equation itself. कितने total number of particles लाएंगे according to equation? So the velocity can go from minus infinity to infinity. This is the maximum range. Whatever particle you take from this system, इस system से कोई भी particle बाहर निकालिए, its velocity is somewhere from minus to plus infinity. Or in other words, what is this thing equal to? ये किसके बराबर होना चाहिए? This is numbers of particles having a speed from minus to plus infinity. We know how many particles are there? All particles, right? So if we carry out this integral, we can find out the unknown constant. Let us do it. C this should be equal to n naught. C is out. Sir, Yes. excuse me, sir. The recording. Oh, sorry. Recording is, yes, recording is continuous. It is running. Now, what is this integral? Can you solve this integral? Or in simple word,
what is the answer for this integral? Integral minus infinity to infinity e to the power minus alpha x squared dx. सर ये तो गॉसियन इंटीग्रल होता है शायद, मतलब Yes. क्या इंटीग्रल होता है, किसके बराबर होगा? कुछ स्क्वायर रूट ऑफ पाई कुछ आता है, याद नहीं आ रहा। याद करेंगे तो भूलेंगे हमेशा, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इवन आई डोंट नो द आंसर, मुझे भी आंसर नहीं मालूम है। हाउ विल यू सॉल्व दिस इंटीग्रल? क्या टेक्निक है आपके पास? Sir, by part. बाई पार्ट? So first we will substitute x square to t and then use by parts. So let us do some math. First suggestion is by parts. कोशिश कीजिए कुछ मिलता है तो। Second suggestion is substitute x square into something, हाँ? Try कीजिए. What you will get in this case? Minus infinity to infinity e to the minus alpha y, and 2x dx becomes dy, right? Or bx is equal to dy upon 2x. dy, sorry, dy upon 2x. 2 and x means root y. ये भी आसान नहीं है करना। कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैन यू सॉल्व एनी ऑफ द इंटीग्रल? ये वाला या ये वाला, दोनों एक ही है। And since x square is y, the limit is from 0 to infinity actually, because now this is symmetric integral. But anyway, this is actually 2 times 0 to infinity because of this limit. You can try, by parts is not going to work, by part भी काम नहीं करेगा. Any other technique? Comparison. Comparison with E की power minus alpha x. what you compare it with? किसके साथ compare करेंगे? Integral of e की power minus alpha x. I don't know what you are saying. Sir square You कर want- देंगे. You will square this integral and then Sir, जो original वाला था. okay, let us say this integral is I. Now you are saying you will calculate I square, huh? Yes, sir. उससे क्या होगा? How will you square it? Sir, उसको एक बार और लिख देंगे और जो dx है उसकी जगह dy और x की जगह y कर देंगे. So this is one standard technique here. We do not calculate I. We calculate I square. I square means this integral 2 times. So first integral is this. Same integral again. And since x is a dummy variable because it will be replaced by this constant after the integration, I can use any other variable also. Okay. Or same thing can be written as double integral 1 on x, 1 on y. These two terms comes together, x square plus y square. This is dx dy. Now this is range on x, this is on y. Sorry. Let us apply this transformation. We are going from xy system to
आर थीटा सिस्टम। क्या ट्रांसफॉर्मेशन रूल है? x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा। So this is equal to e to the minus alpha r square. What is dx dy equal to? कोई बता सकता है क्या आएगा dx dy की जगह पर? तो माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, डी थीटा एंड डी स्क्वायर थीटा। dr d तो थीटा माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा। और dr भी है। Anything else? So what is the technique to find? सर अगर सर की माइनस पावर आर स्क्वायर बाई माइनस 2 साइन 2 थीटा डी। एक मिनट एक करके यस सर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा स्क्वायर। लेट अस गो बैक टू वन वेरिएबल। यहाँ पे आपने कैसे लिखा था? व्हेन वी डिफाइंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y, आई सेड 2x dx इज इक्वल टू dy। ये आपको कैसे पता चला? वी टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, राइट? हमने dy अपॉन dx कैलकुलेट किया था which is 2x, और we can say dy is equal to 2x dx. This is the technique for one variable, जब एक वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन हो। Here we have two variables, और in general we can have as many variables as you want. In general तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या टेक्निक है, क्या स्टैंडर्ड ट्रिक है इंटीग्रल्स को ट्रांसफॉर्म करने की when we are dealing with multiple variables together and they are not independent, independent नहीं है, they are coupled. So x depends on both, x भी दोनों पे डिपेंड करता है, y भी दोनों पे डिपेंड करता है। The answer is this: for all multivariable system, एक या एक से ज्यादा किसी के लिए भी, dx dy is equal to Jacobian times dr d theta. Okay. What is this Jacobian? Del x over del r, del x over del theta, del y over del r, del y over del theta. Okay, the determinant of this thing with positive sign. So what is del x over del r? Cos theta. What is del x over del theta? Minus r sin theta. Del y over del r? Sin theta. Del y over del theta? r cos theta. डिटर्मिनेंट लीजिए, क्या हुआ इसका? आर। r. So dx dy is equal to r dr d theta. ये आपने पढ़ा भी होगा अदरवाइज तरीके से भी नहीं पढ़ा है। And the same techniques work for one variable also. In fact, when you are saying 2x dx is equal to dy, आप यही तरीका लगा रहे थे। dy is equal to Jacobian times dx. What is Jacobian? Del y over del x. How much is del y over del x? 2x. Okay. You can do the same thing for three variables. So dx dy is as simple as r dr d theta only. Okay. The limits. One limits on r, one limits on theta. क्या लिमिट होगी r और थीटा की? Anyone?
सर आर का 0 to infinite. और थीटा का सर -π/2 to π/2. और माइनस ये -π to π होगा. So how do you find the limits? Limits कैसे पता करेंगे आप? See, if you are thinking in terms of mathematics, life is much difficult. Try to get some physical interpretation of these integrals. In integrals का physical meaning क्या हुआ? What is the physical meaning of double integral? वॉल्यूम और ट्रिपल होगा. So this integral वॉल्यूम volume, for volume you need 3 integrals. Volume के लिए आपको 3 इंटीग्रल लगेंगे. So let us first focus on this xy system. So in general, in general terms, we can say we are dealing integral like this: minus infinity to infinity, minus infinity to infinity, some function f, which is a function of both the variable xy, into dx dy. What is the physical meaning of this statement? This. We have as x-axis, हमारे पास एक x-axis है. We have y-axis. Okay. We take at some point a small area. The width of this box is dx. The height of this box is dy. Okay. And let us say this is a central point. ये कोई central point है इसका xy. What is the meaning of fxy dx dy? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? Calculate function at this point. यहाँ पे फंक्शन को कैलकुलेट कीजिए. Multiply it with corresponding area. Corresponding area से multiply कर दीजिए. And then repeat the same process in this range. ये पूरी प्रोसेस हर जगह रिपीट करनी है इस रेंज में. What is the range? This whole 2D universe, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक. मीन्स इन दिस होल 2D प्लेन जो इनफाइनाइट है, हर जगह पर ये नंबर कैलकुलेट करना है एंड देन सम इट अप. सभी जगह का नंबर लेकर के जोड़ लेना है. ओके. लेट अस से दिस फंक्शन इज 1. यदि इस फंक्शन को 1 कर दें एक बार के लिए, मान लीजिए, देन व्हाट इज इट रिप्रेजेंट? अब ये क्या बताएगा? What we are doing? We calculate this area, multiply it with 1. हर जगह से एरिया कैलकुलेट किया, एक से मल्टीप्लाई कर दिया, which does not change your value. And then we are summing up all such area. ऐसे सारे एरिया को सम करते जा रहे हैं. It means we are getting area of this whole 2D universe. But यहाँ पे 1 नहीं है, it is something else. इसकी वैल्यू कुछ अलग है. Near the center, सेंटर के पास, this function is highest value, and as you go away, जैसे आप इधर को या इधर को कहीं भी जाएंगे, its value starts decreasing. इसकी वैल्यू कम होती जा रही है. Okay. And our motive is to calculate all these numbers for each window. हर एक विंडो के लिए नंबर कैलकुलेट करना है, उसी विंडो के एरिया से मल्टीप्लाई भी करना है. And we realize that it is difficult to calculate this number in XY system. XY system में कैलकुलेट करना मुश्किल है. So we are now moving towards R theta system. R theta system में क्या हुआ? E to the power minus alpha R square. This is area element, right? How do we write area element in R theta system? So this is a baseline. यदि R theta system इसी में ड्रॉ करेंगे, तो this is the baseline. This is R is equal to 0. And let us say we are here. यहीं पर ही है. Okay. So this is theta. Theta की वैल्यू ये होगी.
So this is r, this is theta. What is this area? अब ये एरिया किसके बराबर हो? और what is the small elementary area here? So in xy system, you go a little bit along x, you go a little bit along y, and then you calculate area, which is dx dy. इस सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एरिया को? यू गो लिटिल बिट अलोंग r, थोड़ा सा आप r के अलोंग बढ़े, dr. यू मूव लिटिल बिट अलोंग थीटा, थोड़ा सा आप थीटा के अलोंग बढ़े. ये कितना डिस्टेंस चलेंगे? यदि एंगल डेल्टा थीटा चेंज हुआ है तो दिस डिस्टेंस इज r theta. r d theta. So we have moved from theta to theta plus d theta. हम थीटा से थीटा प्लस डी थीटा आगे बढ़े. So कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? r d theta. What is the area covered? एरिया कितना कवर हुआ? This much. dr into r d theta. Okay, this is what we have written. वही हमने लिखा भी है. So area converted to this. So what is the guys, mute yourself please. पहुंच क्या गया? Pintu Kumar, please mute yourself. नीचे नीचे घूम जा. सिर्फ म्यूट करो. Okay. So effectively we can say that now we are calculating same quantity in r theta plane. Okay, for different values of r, for different values of theta. What is the range now? अब r theta की range कैसे calculate करेंगे? In the earlier case, we are trying to calculate this number in whole 2D universe. पूरे 2D universe में हर जगह calculate कर रहे थे. Same thing here. We have to set range of r and theta in such a way that we utilize this whole 2D space. 2D space का हर पॉइंट इसमें कवर हो जाए. So let us first focus on range of theta. पहले theta की range fix करते. So r is something. If we start from theta from 0 and keep going in, keep increasing, इसको increase करते जाएं, then we have covered up a ring. हमने एक ring cover किया है just. The width of the ring is dr. जो ring का width है वो dr है, and it's a complete circle. How do we cover this whole universe? पूरा universe cover करने के लिए क्या करना होगा? We have to change the value of width from 0 से लेकर के कहाँ तक? Infinity तक, right? So the range of r is 0 to infinity. The range of theta is such that we make full circle, पूरा circle बन जाए. So either you can say minus pi to pi, या तो आप minus pi to pi कर लीजिए, okay, or 0 to 2 pi, both have same meaning. So 0 here or 2 pi here. So I square is this. Range r 0 to infinity, range theta 0 to 2 pi, e to the power minus alpha r square r dr d theta. क्या बेनिफिट मिला हमको एक्स वाई से आर थीटा में आने का? दिस इज फंक्शन ऑफ आर, देयर इज नो थीटा हियर. दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, और वी कैन राइट इट एज टू सेपरेट इंटीग्रल, वन फॉर आर, एक तो आर में है. वेल दिस इज नॉट ए बेनिफिट, ये तो पहले भी था. पहले भी एक इंटीग्रल एक्स में था, एक इंटीग्रल वाई में था. The benefit here is, can we solve this integral? Yes. आंसर कितना आएगा? Can we solve this integral? 2 pi. What is the integral? What is the answer for first integral?
Now you can do this integral by parts. ये integral by parts भी कर सकते हैं आप. R स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दें. Or you can just replace r square by some other variable. R square is equal to t. Then it becomes 2r dr is equal to dt. So 2 here, 1 by 2 here. And you can write now 1 by 2. So when r is 0, t is 0. alpha. When r is infinite, t is also infinite. 2r dr becomes dt, e to the minus alpha t. Okay? And this is 2 pi. Pi by alpha. This integral becomes minus alpha upon minus alpha, 0 to infinite. So when infinite, alpha t. So when infinite becomes 0, for 0 it becomes alpha. So it is pi upon alpha. I square. What is I? Okay. So this is what we get. I is equal to root pi by alpha. Let us go back. जो करने जा रहे थे उसको पूरा करते हैं. यहाँ पे अल्फा कितना है? m upon 2kt, right? So c into square root pi upon alpha is equal to n naught, or c square root 2 pi kt upon m is equal to n naught, or this implies c is equal to n naught. Okay. Or numbers of particles, the particle density, this is kya? This is equal to this number. Two kt, okay, dx dvx, or just remove dvx from both sides. This is number density. So if someone asks you how many particles are there in velocity range 0 to 1, just integrate this whole thing from 0 to 1. Okay. If you integrate from minus to plus infinity, you will automatically get n naught. यदि आप इसको minus से plus infinity तक integrate करेंगे, ultimately you will get n naught. Okay. So this is first meaningful outcome. And same thing for y component. Same equation y variable के लिए आ जाएगा. And same equation for z component. ऐसे एक equation z के लिए भी आएगा. Okay. सर वो बताना कि वो नंबर डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं उसको. What is the meaning of density? Density का क्या definition है? per unit volume. When we say mass density, this is mass per unit volume, right? Yes sir. Or if I give you volume, यदि मैं आपको volume दूं, then how do you calculate mass? Mass is equal to density into volume, right? Same thing here. This is numbers of particle per unit range. If I give you range,
Let us say I give you range from some bx is equal to 1 to 3. How will you calculate those numbers? आप कैसे उन numbers को calculate करेंगे? कितने particle है उस range में? You will calculate this integral from 1 to 3 n bx dvx, right? So in that sense, it is number density or it is particle density. कुछ भी कह सकते हैं आप. Okay. Okay, sir. Number density or particle density. Okay. Because this has features of density. इसकी property वही जो density की property होती है. Now let us calculate some output from here. Sir, Yes. sir, you had tell that it is number density, and if we integrate it from minus infinity to infinity, we will get total number of particles. Yes. Sir, but we have put velocity in x direction only, na? There are many particles which have velocity in y and z direction also. Right. So what we are doing right now is this. We take particle, okay. It has velocity in all, I mean it has all three components. It has some bx component, it has some by component, it has some bz component also. Right now we are just focusing only on the x component. अभी हमने से x component पे focus किया है. y और z कुछ भी हम देख ही नहीं रहे. If this component is, let us say 0 to it, let us say this bx is 0.2, we just put it at that point. bx 0.2 मिला, हमने यहाँ पे रख दिया उसको, wherever it is the right place. Okay. We just ignore by and bz. अभी by bz को हमने देखा ही नहीं, वो कुछ भी हो. Okay. और in other words आप ऐसा भी कह सकते हैं, these particles जो इस वाले बॉक्स में है, their x component is from 0 to 0.5. What about their y component? Y component की क्या रेंज होगी, कोई जानता है? y component could be anything, हम देख ही नहीं रहे. Same for z. Z component की कुछ ही वैल्यू हो सकती है. We have no idea. Okay, sir, got it. Yes, sir. So this is true for all bins. सिर्फ इस bin के लिए नहीं, ये हर bin के लिए true है. So this all the bins have same range for y and z. Only the x range is different. Let us calculate average velocity of x component. Or what is the average value of bx? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Now we know कितने पार्टिकल्स किस तरह की वेलोसिटी रखते हैं, so we can calculate average. कर तो सकते हैं. Let us go back to this graph. If this bin size is significantly small, यदि ये size bin का बहुत छोटा है, let us say we have 10 particles in this bin. We can assume that all particles have same velocity, bx1. Let us say we have 7 particles here. And let us assume that all these particles have roughly same velocity, bx2. Okay. Similarly, for all other bins, let us say we have 14 particles here. They have velocity bx3 and so on. How do we calculate average velocity? Average velocity कैसे calculate करेंगे? Average velocity is all velocities, सारी velocity का summation कर लीजिए, divided by numbers of particles. This is the meaning of average velocity, right? So how do we calculate all velocity? These 7 particles have roughly same velocity. So can we say that 7 into bx1, all these 10 particles have same velocity, which is 10, which is bx2. These 14 particles have same velocity, and so on, and just divided by the total number of particles.
This is average velocity, right? So we are going to do the same thing here. ये काम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं. How many particles are there in the range bx to bx plus dbx? Numbers of particles with Dn. value bx to bx plus dbx Dn. and bx dbx, right? So what is the summation of velocity for these many particles? इन सभी की velocity इस range में है, right? So what is the sum of all sum of velocities for these particles? Bx into mbx dbx, right? So what is the sum of velocities for all particles? Sorry. Right? What is the average velocity? One by n naught. बता सकते हैं इंटीग्रल किसके बराबर? और दिस इज पूरा लिख लेते हैं इसको. bx, the constant is this, m upon 2 pi kt e to the power minus m bx square upon 2 kt dvx. कितना हुआ ये? 8 pi upon RT. या कितना होना चाहिए ये? √8 by pi pt upon n. बता सकते हैं क्यों आ रहा है 0? इसको छोड़ दीजिए. सर ये तो समेशन आया है ना सबका. ये तो समेशन है. इसके Odd से function zero. इसीलिए सर. अपोजिट वेलोसिटी होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी. समेशन Odd function. वेलोसिटी कैंसिल हो गई. रैंडम मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कांस्टेंट. ये क्या है? इवन फंक्शन जो vx के नेगेटिव वैल्यू पे है वही vx के पॉजिटिव वैल्यू पर भी है. व्हाट अबाउट दिस? ऑड फंक्शन. Odd. सो व्हाट इज दिस होल थिंग? ये पूरा फंक्शन क्या है? Odd. एंड इफ यू इंटीग्रेट ऑड फंक्शन अंडर सिमेट्रिक लिमिट क्या मिलेगा आपको? 0. 0. 0. y 0 तो मिल गया. क्या 0 आना भी चाहिए था? Yes sir. Yes sir. आना चाहिए. Yes sir. When we say that 10 particles have a velocity from 2 to 2.5. At the same time, please note that roughly 10 particle has velocity -2 to -2.5, right? According to Maxwell-Boltzmann, the number of particles in both the range are same. If you see the symmetry of this distribution, this number is same for positive and negative भी, right? तो जितने particles की velocity प्लस में है, roughly उतने particles की velocity माइनस में भी है. So when you take summation, obviously you will get
some numbers having zero more than some numbers have positive velocity and roughly same numbers have negative velocity. And this is not strange. ये कोई strange phenomena भी नहीं है. If you have 1,000 particles here and someone asks you how many particles are moving towards right and how many are moving towards left, what would be your answer? यदि आपसे पूछ रहा है कितने पार्टिकल राइट में कितने लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, क्या जवाब होगा आपका? 500. Half right side, half left side. Right? Half of them will have positive Vx value. Remaining half of them will have negative. On an average, थोड़ा और fluctuation हो सकता है. So average कितना मिलना चाहिए आपको? 0. 0. Right? That is why this gas does not move any particular direction. यदि इस चैम्बर को खोल भी देंगे आप, it just spread uniformly in all direction. Center of mass गैस का फिर भी वहीं का वहीं रहेगा. It just spread out uniformly in all directions. If you have some non-zero average velocity, then this whole bunch of gas will move in that direction. So this is expected. Average velocity is 0. Next number जो जरूरी है कैलकुलेट करना, एवरेज ऑफ dx स्क्वायर. ये क्या हुआ? एवरेज ऑफ dx स्क्वायर मींस रूट मीन स्क्वायर. CRT by यस. इसको फिर रोड कर देंगे तो रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा. टेक ईच पार्टिकल, कैलकुलेट इट्स एक्स कंपोनेंट, उसका स्क्वायर कीजिए एंड देन टेक एवरेज. ओके. So like these 7 particles have velocity Vx, so we calculate 7 Vx square. These 10 particles have velocity Vx2, so we calculate 10 Vx2 square, 4 Vx3 square and so on. Will we get 0 again? क्या इस बार भी 0 मिलेगा? नो सर. और न्यूमेरिकली यदि आपसे सही से कैलकुलेट करने को कहा जाए, so this simply means that we need to calculate this integral. क्या इंटीग्रल आएगा इस बार? 1/n0 minus infinity. Velocity is bx square. कितने पार्टिकल्स हैं ऐसे? कितने? dvx. Okay. So this is the numbers of particle. इतने particles हैं जिनका velocity vx है, and therefore the summation of bx square उनका ये हो जाएगा, और सभी का करना है तो this range. So this is the bx square average. bx square average किसके बराबर है इंटीग्रल? 3kt/m. So 1/n0 is out. Square root m/2 pi kt is out. सिर्फ कितना सॉल्व करना है आपको? bx square e to the power minus mbx square upon 2 kt dvx. So again a mathematical equation. Actually आपको ये पता करना है. x square e to the power minus alpha x square minus infinity to infinity dx. So पहले आपने ये इंटीग्रल कैलकुलेट किया था e to the power minus alpha x square only, है ना? अब ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? कुछ सोचा इसके बारे में? So इसका आंसर आपको पता है. इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. x e to the minus alpha x square dx बाई पार्ट्स और बाई सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपकी टेक्निक है.
अब ये पार्ट आया है आपके पास। हाउ विल यू सॉल्व दिस? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? In fact, we can write series of such integrals. और सीधे सीधे लिखा जाए तो ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? So let us first focus on this part. पहले इसको फोकस करते, ये सॉल्व हो गया तो नीचे का भी कर ही सकते हो। कोई ट्रिक है आपके पास? Sir, by parts we can solve. ट्राई कीजिए। यदि आप मानते हैं एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल, क्या मिलेगा आपको? सो 2x dx dt, you will get integral like this. कुछ कांस्टेंट का फर्क आएगा, e to the power minus alpha t and x dx goes into dt and there is one more x, एक x अभी बचा है which is root t. ओके, आपको इस तरह का इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज स्क्वायर रूट। जब तक स्क्वायर रूट में कोई चीज रहेगी, बाई पार्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यू कैन नेवर एलिमिनेट दिस थिंग। इसका कितना भी डेरिवेटिव कर लीजिए, खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट ना ही ये खत्म होगा, ना ही ये खत्म होगा, whether you integrate it or differentiate it. So by part is not going to work here. कोई और टेक्निक है? So since the class is going to end, I am just going to give you a hint. इसको थोड़ा खुद से भी कोशिश कीजिएगा। क्या मिला था हमें पहले, इससे पहले? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर रूट पाई अपॉन एल्फा। ये अभी हमने ड्राइव किया है। लेट मी कॉल इट एफ एल्फा। Okay, let me call it some phi alpha. अल्टीमेटली अल्फा का फंक्शन है, एक्स तो खत्म हो जाएगा इंटीग्रल होने के बाद। क्या कनेक्शन है फाई और एफ में? कैन यू फिगर आउट सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू? Sir, f was x into e की power minus alpha x square. नहीं, since if you introduce x तो फिर लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। What I'm trying to say is that x कहीं आपके फॉर्मूले में कहीं आना ही नहीं है, राइट? द फाइनल आंसर डज नॉट हैव एनी x, होना भी नहीं चाहिए बिकॉज वो तो डमी वेरिएबल है। So can you somehow find a connection between these two without going into x variable? x variable को यूज किए बिना भी क्या इन दोनों के बीच कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं? Because once you find this connection, आप उसी कनेक्शन से इस अननोन को इससे मैप कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट। इसको थोड़ा सोचिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं है। ओके, इट इज जस्ट वन लाइन। एक्चुअली इट विल रफली टेक 1/8 ऑफ ए लाइन। जो भी कनेक्शन है वो इतना छोटा है। सो सर्च ऑन इंटरनेट, आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए क्या टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। ट्राई ऑन योर ओन, उससे भी कोशिश कर सकते हैं। लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। ओके, I'll tell you how do you deal with this kind of problems. And once you deal with x square, then you can deal with any problem. फिर आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। For odd problem,
you can follow this method. For even, you can follow this method. So with this, let me end this class here. Any doubt? कुछ पूछना है यहाँ पे? And I have already uploaded the reading material in your file section, group I. So if you go to this class materials resources folder, either you can follow this modern physics book, or you can also follow some scanned pages of other book. Okay. So I am following chapter 11 from this book. Let me show it to you. BTech. So I am following chapter 11 right now. So this is what we discussed in the last class. ये जो भी है last class में discuss किया था. The number of ways the gas can rearrange itself. Okay. This is the Maxwell-Boltzmann relation. Okay. And now we are going to discuss some average velocity and other things. So please follow this book or any other book. ये book या कोई अलग दूसरी book आप follow कर सकते हैं. If you have any doubt, you can ask me in any class. थैंक यू सर। सर हमारी बुक आपने quizzes प्रोवाइड करवा दिया? कब से हो सकती है सर? 1 minute, 1 by 1. Yes. सर क्विजेस कब से हो सकती हैं? मतलब जैसे हमारा रिलेटिविटी तो खत्म हो गया, तो उससे रिलेटेड क्विज मतलब आप बताएंगे या फिर सरप्राइज टेस्ट जैसा होगा? So who is taking your tutorial class? आपकी tutorial class कौन ले रहे हैं? देवव्रत सर। देवव्रत सर। देवव्रत सर। He will take your tutorial. जो आपका tutorial class ले रहे हैं वो आपके quizzes भी लेंगे. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। Anything else? जो बुक आपने शो किया वो शेयर कर दिया टीम पे? So it is there in the file section. आपको मिल जानी चाहिए, सुबह मैंने अपलोड किया था. Yes sir है। All right. Okay. Okay sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you sir. Thank you.